ऑनलाइन चेक कर रे लाइव छाड़ सारे ज्योति देखो ओके मिथुन गला ऑनलाइन लिंक गला आसला समस्त ऑनलाइन लिंक सुमन देखो चेक करो ऑनलाइन लिंक गला नहीं आज एक्सेल आमर फास्ट पार्ट आम डिस्कसन करवा ओके आसो ऑडियो वीडियो समस्ते क्लियर ओके 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 ऑडियो वीडियो क्लियर नहीं चैट बॉक्स रे वाई लिख यदि ऑडियो वीडियो क्लियर देन चैट बॉक्स रे वाई टाइप करो वाई एंटर ओके 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 देन ओके सो हमार एक्सेल स्टार्ट करने आगु फास्ट ऑफ ऑल गोटे कंपैरिजन करुच्ची आमर जो प्रोग्राम आम लर्न करुचे से प्रोग्राम रो ना कौन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यू ऑल हैव आवर पिक आमर मेन प्रोग्राम नेम इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑफिस अंडर आमर पांचटा मॉड्यूल डिस्कशन होची नंबर 1 एमएस एक्सेल नंबर 2 एमएस पावर पॉइंट नंबर 3 एमएस एक्सेस नंबर 4 एमएस पब्लिशर and finally number 5 MS Word. So ये है हमारा पांचटा मॉड्यूल ये पांचटा मॉड्यूल को हम वन बाय वन लर्न करेंगे अच्छी टुडे चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट इज कॉल्ड Microsoft Excel. Okay, so Excel chapter is otherwise known as working in Excel is known as DBMS format. Work in Excel is usually known as DBS format, and for your knowledge, DBMS stands for Database Management System. Database Management System. So it हम term आसिला what is a database? Anybody कहि परिबो what do you mean by database? Database माने कोन बुझछो? What do you mean by database? लिखो चैट बॉक्स में लिखी पठा जी जा database रे बुझछो explain it करो जहाँ भाव चलो इट इज नॉट एग्जाम इट इज जस्ट ए डिस्कशन और क्लास तुम जिते पार्टिसिपेटरी हम से बेटर टू अंडरस्टैंड ओके सो व्हाट डू मीन बाय डाटाबेस अच्छा वन आंसर कम हेडिंग व्हाट एल्स आउ के कौन भावुछ व्हाट डू मीन बाय डाटाबेस
अच्छा डाटा एंड इनफॉरमेशंस ओके आउ कौन इनफॉरमेशन कौन ज्योति कौन भावुच व्हाट डू मीन बाय डाटाबेस ओके सो किसटा समान आसी वन ऑफ हेडिंग आ गोटे आसला डाटा एंड इनफॉरमेशन ताको आम आउ टिके सिस्टमेटिक करवा सिस्टमेटिक ए सेंस रे कहूची ए database is a collection of related information put inside a table. Okay. So जेकोसी गोटे इंडिविजुअल बीइंग हो कि गोटे ऑर्गेनाइजेशन हो ता विषय कंप्लीट ए टू जेड इनफॉरमेशन गोटे सिस्टमेटिक ऑर्डर रे आम सजेक रखा प्रोसेसटा कह जाए डाटाबेस मैनेजमेंट एंड यू ऑल नो योर डाटाबेस ऑलवेज कंटेन्स टेबल्स कारण टेबल भितर ही डाटा पुट हुए एवं जो प्रथम रो जो लिखाई थाए तुम जन सांगना कहते हेडिंग टेबल कंटेन हेडिंग्स दीज आर नोन एट फील्ड्स सपोज गोटे इंस्टीट्यूशन में तुम पिला डाटा सेट तैयारी कर प्रथम टेबल हेडिंग कौन दला नेम ऑफ द स्टूडेंट फादर्स नेम मदर्स नेम सिटी स्टेट कंट्री क्लास सेक्शन रोल नंबर एक्सेट्रा एक्सेट्रा सो आज पर द हेडिंग आम रो अनुसार डाटा लिखि लिखि जाऊे सो तुम जब हेडिंगटा प्रॉपर्ली डिफाइन न हो हाउ डू नो मोर यही कलम तले मो ना लिखा दरकार यही कलम तले मोर डेट ऑफ बर्थ लिखा दरकार कि यही कलम तले मोर फादर्स नेम लिखा दरकार सो यू हैव टू पुट ए स्पेसिफिक हेडिंग जोटा कि टेक्निकली टेबल आम से पर्सन कौन को कलम हेडिंग otherwise known as fields. So as for the fields, आमे रो अनुसार डाटा पुट करके जाओ and the combination of more than one row together that is known as a table. एवं usually database हमर तैयारी हुए कोटी टेबल रे. So ए पॉइंट रू आमे गोटे जिनिस डिराइव कले एक्सेल फाइल is made up of tables. आम बर्तमान माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कम शिखा जाऊे यू शुड बी वेरी क्लियर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग यू आर नो मोर डाटा एंट्रिंग इन ए ब्लैंक पेज रादर व्हेयर यू आर एंट्रिंग डाटा इनसाइड ए टेबल दैट्स व्हाई व्हाट आई एम राइटिंग डाउन हियर एक्सेल फाइल इज मेड अप ऑफ टेबल्स इन कंपैरिजन टू दिस वर्ड फाइल आम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जीवा यू सी वर्ड फाइल we enter data inside a blank page. So that is the main difference between your Microsoft Word and Microsoft Excel. हमें जानिया दरकार Word एतला में डाटा एंट्री करूछु Word एतला में डाटा एंट्री करूछु टेक्निकली you are entering data where inside a blank page. In comparison to this हमें एतला Excel डाटा एंट्री करूछु हमें कहा भीतर डाटा पुट कर टेबल सो डिफरेंस है कौन वार्ड रे हमको टेबल तैयारी करिया को पड़े तापर हम डाटाबेस मेंटेन कर पड़छु बट एक्सेल पेज इज बाय डिफॉल्ट मेड अप ऑफ टेबल्स सो हम टेबल भीतर डाटा एंट्री करछु सो आई एम टेलिंग ऑल दिस थिंग्स एटा कहबार मेन रीजन है कौन ब्लैंक पेज रे डाटा एंट्री करबा एवं टेबल भीतर डाटा एंट्री करबा इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इज द सेंस कौन एठी बर्तन समस्त देखि परथुम बर्तन को प्रोग्राम टा खोलिछि वर्ड ये आम कौन लिखाई वर्ड एवं पेज रो लेफ्ट बॉटम कॉर्नर को मार्क कर ये कौन लिखाई पेज 1 of 1 ओके पेज 1 of 1 सो पॉइंट इज दैट पेज 1 of 1 आम मेंटेन करे डाहन पट 1 टा क्या बुझाऊँ यस आमर वर्ड फाइल रे वॉल्यूम ऑफ पेजेस हाउ मेनी नंबर ऑफ पेजेस आर देयर एवं बाम पट 1 टा क्या बुझाऊँ करेंट पेज करेंटली यू आर इन व्हेयर ओके अच्छा दिस इज द वर्ड पोजिशन मोर कह रिजन है कौन आम वर्ड फाइल यू नो व्हेयर यू एग्जिस्ट यू नो हाउ मेनी नंबर ऑफ पेजेस हैज बीन क्रिएटेड इन ए सिंगल फाइल एंड करेंटली यू आर इन व्हिच नंबर पेज इन कंपैरिजन टू दिस जतला आम एक्सेल प्रोग्राम ओपन अप करूचे जस्ट हैव ए लुक
बर्तमान मुझे कौन ओपन कली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल गोइंग टू बी ओपन yes now it is opening okay done then एटी गोटे वार्ड देख आम जो वार्ड प्रोग्राम खोलिए ए जगह देखो ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स ये आम कौन देखला ब्लैंक वर्क बुक मार्क माय वर्ड इट इज कॉल्ड ब्लैंक वर्क बुक सी ब्लैंक वर्क बुक जो आम लेफ्ट बटन प्रेस करुचे as I told you earlier excel file is made up of tables तुम बर्तमान टिके आगु वार्ड रे थिला इट इज ए ब्लैंक पेज तापर आम डाटा लिखीचे बट जो आम एक्सेल को आसुचे ये जो एबीसीडी देखुचे दीज आर व्हाट कॉलम्स ओके एंड ये जो 1 2 3 4 देखुचे दीज आर व्हाट रोज एंड द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम जो गोटे छोट छोट रेक्टांगुलर बॉक्स एठी हमर जनरेट हेची का भितरे रो और कॉलम रो इंटरसेक्ट जोठी हला दैट इज नोन एज व्हाट सेल so mark my word you are entering data either in some column or either in some row to be more specific technically you are entering data where inside a cell because cell resides where inside the intersection of row and column okay एठी तो माउस प्रेस करूची एठी कोन शो कला C11 एठी तो ए सेल ऊपर माउस क्लिक कली एठी शो कला कोन K12 so K stands for column and 12 stands for row एठी तो क्लिक करछे एठी कोन शो कला E9 E stands for column and 9 stands for row so anybody any idea ये जो K9 C11 एठी H10 what is it called लेखि पठा चैट बॉक्स रे लेखो कोन भाबुछ एटा कोन हे पारे हमर ये जो बर्तन K11 F10 C11 S7 it is changing ना it is changing okay so technically what is it called आपको मैं कौन कहूँ छु तार माने कौन हमें कौन बुझु छु ये काहा को जस्टिफाई करू छि काहा को बुझु छि yes okay no idea कौन मिथुन काहा को बुझो छि ता ये जो C11 C12 जो देखेला एटा काहा को बुझो छि name and number of what name and number of what ठीक अच्छे I agree that is name and number but name and number of what अच्छा एठी पूर्णमणि कोन लिखले it is defined that where we place the data okay then मिथुन असला cell name and number okay what else any other suggestion मोटामोटी पाखापाखि ठीक आंसर लिखिलणी मुझे आउ टिके प्रिसाइज कर दूची यस आसला रोशन दैट इज सेल नेम एंड इनफॉरमेशन ओके ताको आउ टिके क्लोजर को जीवा दैट इज कॉल्ड सेल रेफरेंस नंबर सो एक्चुअल टर्म इज दैट इज कॉल्ड सेल रेफरेंसेस नंबर बाकी तुम मैंने जहाँ ताको इंटरप्रिट कल दैट इज आल्सो करेक्ट because this is the C एठी हमर कोन शो कला C14 so C stands for name of the column and 14 stands for name of the row so point हला कोन एठी जतले एक्सेल फाइल हम ओपन करछे एते संख्यक रो कॉलम देखुचे करेंटली हमें पूरा पेज रो को भाग रे अच्छे
ताकू जदि आम ट्रैक करने चाहिए जस्ट हैड लुक एट द सेल रेफरेंस नंबर एवं फॉर योर नॉलेज ये जो C14 कि A7 कि A7 आसूची दिस इज कॉल्ड व्हाट नेम बॉक्स आकु तो आम कहूँ सेल रेफरेंस नंबर दिस ऑल्सो अदरवाइज नोन एज व्हाट नेम बॉक्स ओके आकु आम नेम बॉक्स भी कहि परिबा कारण नेम बॉक्स आमर काहा को आइडेंटिफाई करूची where you currently exist आम गोटे पेज रो को भाग रे अच्छे एठी तो मैं एक्जेक्टली गोटे पेज बोली कहि परबिनी बिकॉज आम एतरठी ऊपर देखुचे टॉप ऑफ द लाइन एठी कोन शो करछि बुक 1 एठी हमर कोन शो करछि बुक 1 सो टेक्निकली एनीबॉडी कहि परबो व्हाट डू मीन बाय बुक एंड व्हाट डू मीन बाय डॉक्यूमेंट तुम जो वर्ड फाइल ओपन करथलो वर्ड रो ऊपर शो करथला दैट इज अ डॉक्यूमेंट एठी हमर कोन शो करछि बुक सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डॉक्यूमेंट एंड अ बुक any suggestion lekho any suggestions the difference between document and book is what okay just shortcut diyo what do you mean by book what do you mean by document what do you mean by book and what do you mean by documents just whatever you think simply write it down file in a word is a document and file in excel is workbook very cunning answer very cunning word ऊपर लिखा है डॉक्यूमेंट एक्सेल ऊपर लिखा है वर्कबुक तुम से अनुसार एनालाइज कर दला ओके एनी अदर सजेशंस ग्रेट आंसर है ओके अरे सुनो वेरी सिंपल वे रे बुक माने हम नॉर्मली कौन बुझु इट इज अ प्लेस it is a location where multiple pages are combined so document is a singular term and book is a plural term ekavachana bahuvachana simple gote single word ta ame तरफ खोलुछु तमरो टिके आगुरु स्टेटस कोन देखेला one of one कारण आमे काम गोटे पेज रु स्टार्ट करछु ऑफ कोर्स यू कैन प्रोसीड आमे एकाधिक पेज भी आमे तयारी करि परिबा बट पॉइंट इज दैट कोन वार्ड रे जितने भी जॉब टेबल बसु किसी काम स्टार्ट करने ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ए सिंगल पेज ओके बट एक्सेल बुक आज ए होल फाइल को हमर कोन कहू वर्क बुक इटे तळे मार्क करो बाम पटे कोन देखौची वर्कशीट बाम पटे हमर कोन देखौची वर्कशीट ओके राइट सो एक्सेल फाइल इट इज ए work book contains work sheet and for your knowledge an worksheet is a combination of more than one row or columns more than one number of rows and columns so to be precise an worksheet contains 10,665 number of columns and 1,48,576
number of rows as per the older version of MS Office program like MS Office 2003 version. And as for the latest MS Office version, it is much more than that. Okay, it is much more than that. So the condition is, why it is called as a book? Our first term, आमे word तो जानिले blank page रू आरंभ करछु जोटा कहछु single page or single document. But you can increase the volume of pages as per the job requirement. But Excel file, jatra हम open करछु, you are seeing a table only. And for your knowledge, इठी हमें कोड अच्छे sheet number 1, workbook, file को आज whole को आज कौन workbook contains what? Worksheets. तो खाली sheet लिखा है जी, ताको हम कौन कहछु worksheets. And each worksheet contains more than one number of rows and columns. What I mean to say, इठी हमें column केते देखुछे O पर्यंत. O माने केतरा हला? इठी हमर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 columns. Row केते देखुछे 22 point. But my question is it the end? No. It is much more than that. Okay, it is the right arrow धीरे धीरे move forward करूची see my columns number are increasing. Similar जदि मु down arrow down तळकु जाउची बाम पटे मार्क करो my row number are increasing. So तम गोटे MS Office रो old version 2003 रो statistics देली गोटे single sheet worksheet रे हम पाइबा केते 10665 टा column and what about rows 1,48,576 number of rows. So just think, just imagine, assume करो तमरो गोटे वर्कशीट रे जेते सारे रो कॉलम अछि सब रो कॉलम रे तमे डाटा एंट्री कलो धरि नियो हम गोटे जॉब वर दिया गला ऑफ कोर्स द जॉब इज इन ए टेबुलर फॉर्मेट आमे ता धरे जेते रो कॉलम अछि मोर गोटे वर्कशीट रे सब गणी गणी के डाटा पुट कले बट फ्रैंकली स्पीकिंग को एते संख्यक रो कॉलम रे लिखा हिथिबा डाटा मोर जतरे मु प्रिंट आउट बाहर करिया को जिबी केतरा पेज रे आसीबो एनी आईडिया मोर बर्तन तुमको ओल्ड वर्जन अनुसार गोटे सीट रे केते रो केते कॉलम अछि आई एम एक्सप्लोरिंग अज्यूम करो मु सब रो कॉलम रे डाटा लिखि देली अच्छा डाटा एंट्री कर सला पर लास्ट पार्ट हाउ टू डू टेक द प्रिंट आउट कॉपी बाहर करबा सो क्वेश्चन कम whether all the data that you have entered come in a single page or more than one number of pages what do you think गोटे पेज रे आसी बुझिरडा बुझिरडे व्हाट आई एम आस्किंग मोर जेते रो कॉलम कहली धरि नियो मु सब रो कॉलम रे डाटा लिखि देली डाटा लिखला पर जॉब इज फिनिश्ड काम सरला पर हम कोन करे तार प्रिंट आउट बाहर करबा अच्छा जरा मैं प्रिंट आउट बाहर करबा प्रिंटर मशीन रे केतरा पेपर दबा गोटे पेपर दबा लिखि पठ के जण केतरा पेपर होली भाबुचो जति केतरा पेपर गोटे पेपर ना दुटा पेपर ना 10टा पेपर ना 100टा पेपर ना 500 पेपर ना 1000 पेपर केतरा पेपर कॉपी बाहर बोले भाबुचो लेख लेख क्विक क्विक खाली नंबर लेख खाली नंबर if you enter data in all the rows and columns that exist in a single sheet at the time of taking the printout how many pages of data will be generated it contain one page or it contain more than one page कौन भाबुचो केतरा पेज हमर आस पारे कौन पूर्णमयी केतरा भाबुचो गोटे पेज ना अधिक पेज more than one page everybody agree more than one Mithun is one okay Roshan is also one
ओके पूर्णमयी केतरा मोर देन वन पेज ओके एक्चुअली टू ऑफ द आंसर्स आर रॉन्ग वन तो कभी भी हबनी है इट मोर देन वन पेज बट प्राक्टिकली कहवाटा संभव नुहे केतरा पेज आसला आमर से चेकिंग कर अलग प्रोसीजर अच्छी कारण एक्सेल जो आम फास्ट मोड बर्तमान आरंभ करने जाऊे नेम ऑफ द चैप्टर इज पेज सेटअप ओके चैप्टर ना है पेज सेटअप से सब वन बाय वन तुमको डिस्कस करुच्ची एक्सेल जिते आम रो कलम डाटा एंट्री आम करमको सब अंडर इम्प्रेशन आसुए as if you are entering data in a single page. That's why your friends are telling it contain one page. এটা কনফ্ୟୁଜନ୍ হওয়াটা কিছু ଅନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ନୁହେଁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ଆମକୁ କୁହାଗଲା ଏତିକିଟା ରୋ କଲମରେ ଡାଟା ଲେଖ ଆମେ ରୋ କଲମ କାଉଣ୍ଟ କରିକି ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲେ ବଟ୍ ଯେତିକି ରୋ କଲମରେ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ଇଟ୍ କଣ୍ଟେନ୍ ହାଉ ମେନି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପେଜେସ୍ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ବିକଜ୍ ଟେଲ୍ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର A1 ସେଲ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଆରମ୍ଭ କଲି am I seeing the end of the page? No. ଏଠି ଯଦି ମୁଁ ଡାଉନ୍ ଆରୋ ପ୍ରେସ୍ କରୁଛି ଏଠି ମୁଁ ପେଜ୍ର ଏଣ୍ଡ ବି ଜାଣିପାରୁଛି କି ତେଣୁ ମୁଁ ପେଜ୍ର ଓନ୍ଲି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟଟା ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିପାରୁଛି କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମୋର ଗୋଟେ ପେଜ୍ ସରିଲା କି ଦୁଇଟା ପେଜ୍ ସରିଲା କି ତିନିଟା ପେଜ୍ ସରିଲା କି ପାଞ୍ଚଟା ପେଜ୍ ସରିଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଓକେ ସେଥିପାଇଁ ଏକ୍ସେଲର ଲଜିକ୍ ହେଲା କ'ଣ ଏକ୍ସେଲରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଥାଉ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଅଣ୍ଡର ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଲାଗିଥାଏ ଆଜି ଫେର୍ ଏଣ୍ଟ୍ରିଂ ଡାଟା ଇନ୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ ପେଜ୍ ବଟ୍ ଅଜାଣତରେ ଏକାଧିକ ପେଜ୍ ତିଆରି ହେଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଏକ୍ସେଲରେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଥାଉ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ମଷ୍ଟ तुमको फास्ट थिंग जो डाटा दिज्व गोटे टेबुलर बेला तो डाटा दिहब दैट इज कन्स्टाट कारण प्लेन पैराग्राफ तुमको एक्सेल लिखा कहबे प्लेन पैराग्राफ लिखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम इज देयर ओनली को टाइप डाटा तुमको कम आसो जो डाटा टेबुल भितर लिखवाटा जरूरी ओके सेटा मे भी स्टूडेंट डाटाबेस हो पिलांकर मार्कशीट हो बिल तैयारी कर व्हाट एवर जहाँ भी तुम तैयारी कर केवल टेबुलर फॉर्म डाटा तुम कौन कल रो कलम काउंट करके डाटा लिखिद अच्छा जिते आम प्रिंटर मेसीन कॉपी बाहर करवा टेल मी आमर प्रिंटर मेसीन को साइज पेपर दबा A4 साइज दबा पेपर तेणु गोटे A4 साइज पेपर विड्थ रे केतरा कलम डाटा रहिबो कि हाइट अनुसार केतरा रो डाटा रहिबो आमे जानिनु तेणु आमे केमती हठात गोटे कनक्लूजन में पहुँचा मुझे जेतिकिटा रो कलम डाटा लिखिली सेटा मोर गोटे पेज रहिबो कि दुईटा पेज रहिबो कि तीनटा पेज रहिबो से एक्सेल रे आमर अनदर कमांड अच्छी से कमांडर ना है प्रिंट प्रिव्यू कारण प्रिंट प्रिव्यू एकमात्र गोटे टूल जी आमको सही माने पेज्र फिजिकल पोजिशनटा डिटरमाइन करके देखब खाली देखनी से देखेब जितकीटा पेज्रे डाटा कंटेंट बोली शो करुच्ची से पेज गुड़िक मोर पूरा फुल होती ना आधा अधूरा होती अच्छी एवं आम केमती रिसेटिंग करवा एवं काम केमती प्रोसीड करवा ओके सो आमर फास्ट मॉड्यूल आम लर्न करने जाऊे हाउ टू सेट द पेज इन एक्सेल फाइल बट पेज सेटअप उपरको जावा आगु आउ किछिटा बेसिक छोट छोट पॉइंट आगे डिस्कसन करुच्ची एक्सेल आम काम कले टेक्निकाली को टाइप रो प्रॉब्लम यू मे फेस द फर्स्ट प्रॉब्लम आई डिस्कसिंग जस्ट नाउ मु बर्तमान तुम प्रथम प्रॉब्लम ऑलरेडी डिस्कस कर सारे आम जिते भी डाटा एंट्री करुचु केतेटा पेज रे मोर डाटा एंट्री होची आम आसेसमेंट करिपरनु सीधा हमको पुणी प्रिंट प्रिव्यू जाई कि दोबारा क्रॉस चेक करके पेज को दोबारा अरेंज करके पुणी तापर प्रिंट प्रिव्यू देखिबो जेतरा कंफर्म हो यस आमर एतिकटा पेज रे कॉपी बाहर करियार थिला हाँ बर्तमान डाटा मोर एतिकटा पेज रे अकोमोडेट हो सारानी खाली सुन देख मे बी भेरी सुन तुम देखिबो जेतरा हम प्रिव्यू देखिबा तुमको लागुथिबो कोन मु गोटे पेज डाटा एंट्री करछि बट जो प्रिव्यू चेक करेंगे देखो तुम 4टा कि 5टा पेज अच्छे प्रथम पेजटा आगे देख प्रिव्यू स्टाटस देखो जमी तुम वार्ड देखुला 1 of 1 1 of 2 1 of 3 लाइक दिस एक्जाक्टली सेम स्क्रीन यू आर गेटिंग तुम कौन कर गोटे पेज फरवर्ड कर कौन पाई क्रॉस चेक करने जदि बर्तमान स्टाटस देखा मोर 5टा पेज रे डाटा पुट होती वेदर ऑल द 5 पेजेस आर वेल फिल्ड और नॉट सब पेज गुड़िक भरी होती ना नहीं जदि भरी रही आमर चेक करा दरकार नहीं पेपर लगे प्रिंटर मेसीन प्रिंट आउट बाहर कले चलने एमती बेले रही पारे मोर फास्ट पेजटा फुल हो पारे सेकेंड पेजटा अधा थी पारे थर्ड पेजटा अधार अधा थी पारे फोर्थ पेजटा तार अधा थी पारे फिफ्थ पेज रे गोटे लाइन रही पारे मु बिना चेकिंग करी जदि प्रिंट कमांड दे दूसरी सरीगला कथा मोर गोटे पेजटा फुली बाहरला सेकेंड पेजटा अधा बाहरला बाकी 3टा पेज मोर वेस्टेज रे गला ओके
आदर जिनस कौन है अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ पेपर वेस्टेज ऑफ स्पेस प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट मु जो ऑर्डर जो सीक्वेंस रे गोटे सीरियल मैनर प्रिंटिंग बाहर करने चाहूँगी दैट मे नॉट कम छोट एग्जांपल दूसरी तुम पिला डाटा सीट तैयारी कल तुमको कैटेगोरिकली इंस्ट्रक्शन दिगला जो डाटा सीटा कर जहाँ को भी दब कॉपीटा से हेडिंग गुड़िक सब गोटे पेज में देखिपार सो कैन ही और सी कैन कीप ए ट्रैक मतलब ना तो ना डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ बर्थ जेंडर तो जेंडर फादर्स नेम तो फादर्स नेम तुम से 15टा कि 20टा हेडिंग कलम हेडिंग तुम कौन कल ए बी सी डी घर गड़ी गड़ी हेडिंग पके पके कल ए हेडिंग अनुसार डाटा लिखले कल तुम जान कौन मोर 20टा हेडिंग थी मुझे 20टा हेडिंग लिखिली तले डाटा भी लिखिली डन प्रिंट बाहर करदेवी कम सारिदेवी किंतु बाहर कौन 2टा पेज फाड़े फाड़े भी बाहर प्रथम पेज अधा बाहर 8टा कि 9टा सेकेंड पेज आउ 10-11टा बाहर किंतु 2टा पेज तले गुड़ाए खाली जगह तुम अननेसेसरी बंची थो ताले जो लोकटी को दब सी तुम ऊपर विरक्त हम निश्चय कारण गोटे जिनस को एक्सेसमेंट करने जब संपूर्ण जिनसर जोटा को ट्रैक करते क्या ट्रैक करते हेडिंग अनुसार तुम डाटा लिखीचे ना सेटा दी एक कारण देखेबी ताले मु सपोज पूर्णमयी स्टूडेंट तार डिटेलटा मु गोटे पेज रे एकाथरे देखिपारि तार फाड़े गोटे पेज देखी पुणी ताकू मैचिंग करके पुणी सेकेंड पेज को चेक कला कौन हम अननेसेसरी टाइम लगे बोरिंग हम इरिटेशन आसो से आमको कौन करा पड़े सजेक पड़े फास्ट थिंग अधिका पेज डाटा जमी आम वेस्टेज न हो आम कम पेज करने चेष्टा करवा सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो तुम अधिका डाटा को कम पेज सजेब कि बी केयरफुल सबू डाटा गुड़िक प्रॉपर्ली पढ़ा योग्य रहा निहाती दरकार मोर अधिका पेज डाटा को कम पेज करने को माने नुहे जे मु ड्रैग करके बड़ सान करदेवी मुझे प्रिंटिंग बाहर करी लोक कह देखाओ माइक्रोस्कोप नियो तले देख नॉट लाइक दैट प्रिंटेबल पढ़ा योग्य एवं सीरियल ऑर्डर रे डाटा तक मोर रहा निहाती दरकार एतिका जिनस तुम बी केयरफुल बट सेठू को आम जा आगु मुझे तुम पेज एक्चुअल पोजिशन में आम एक्सेस कर सी गोटे प्रोब्लेम आउ कौन कौन प्रोब्लेम तुम एक्सेल फेस करुच ता विषय डिस्कसन करदे आम पेज सेटअप को प्रैक्टिकली देखे देखो किसी छोट छोट एग्जांपल लिखुची 1.00 समझते देखुच 1.00 1.10 1.01 anybody tell me where is my zeros मु 1.00 प्रथम लिखी ना नहीं तापर 1.10 लिखी ना नहीं लास्ट को 1.01 लिखी ना नहीं सो लिखला बेलू मत किसी डिफरेन्स जना पड़ ना तो लेखा सरीगला माय जीरोज गॉन सो टेल मी व्हाट इज माय जीरोज व्हाट्स रॉन्ग हियर पठा पठा चैट बॉक्स लिख कौन हो पारे मो जीरो कहीं रही व्हाट इज माय जीरोज मिथुन जीरो कड़े गला ओके कहीं तुमको किसी आंसर पाइली नहीं अपन जे व्हाट इज माय जीरोज आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टेलिंग यू मीन टू से जीरो डजंट हैव एनी वैल्यू आफ्टर द डेसिमल पॉइंट दैट्स व्हाई जीरो रही किंतु कहीं मु तो अच्छा डेसिमल प्लेस अधा लिखी छाड़देला सुमन बहुत चालाक अच्छी सब माने पूरा आरंभ कर दे छाड़ दे माने हाँ भी कहीपर ना भी कहीपर पूरा सस्पेंस रखी छाड़ दे तार आज सब बेस्ट आंसर आसला मुझे कह लास्ट को बेस्ट आंसर आउ थे कह ओके एनीवे सो व्हाट शी इज टेलिंग जीरो डजंट हैव एनी वैल्यू आफ्टर द डेसिमल पॉइंट दैट इज ओके ठीक अच्छे मत तुम खाता लिखी देखाओ विदाउट पुटिंग एनी सिंबल 10 टंका 10 संख्या सिंबल दबनी 10 लिख जी भी देख सी बुझे एटा 10 नंबर आउ गोटे बुझे 10 रुपीज बट रुपया सिंबल कि आर सिंबल दिहबनी पठाओ लिखी केमती लिख पठेल चैट बॉक्स लिख 10 टंका किसी रुपया फिर लिखा हेनी 10 रुपीज लिखी छाड़देवनी है नो टेक्स्ट डाउन सिंपली तुमको हाँ
Nah, no symbol. But anybody can see, he or she can tell this is 10 number, this is 10 rupees. Okay. ଲେଖ ଲେଖ ଯାହା ଭାବୁଛ ପଟା 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 আচ্ছা 10.00 আচ্ছা 10 নম্বরটা তুমি বর্তমান আনসার দিয়েছিল না 0 doesn't have any value after the decimal point তুমি কেমন 0.00 ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲ 0 পয়সা ঠিক আছে কিন্তু দেখো তম আনসার উপরে ହିଁ লেখা ହେଇଛି 0 doesn't have any value after the decimal point পুଣି ଲେଖିଲ ଏଠି 10.00 କାରଣ ଦଶମିକ ଯଦି 00 ଛାଡ଼ି ଦେଉଛ ତାହେଲେ it will be identified as a 10 it will not identify 10 rupees so ମନେ ରଖିଥାଅ 0 is 0 okay 0 is 0 you never leave 0 एक ସାଙ୍ଗରେ 0 ଯୋଡ଼ିଦେଲେ 10 ହେଇଯାଉଛି ଦୁଇଟା 0 ଯୋଡ଼ିଦେଲେ 100 ହେଇଯାଉଛି ପାଞ୍ଚଟା 0 ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଲକ୍ଷେ ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁ 0 is not 0 0 is always 0 okay I agree 0 doesn't have any value after the decimal point that is okay but এটি আমার মূলରୁ କହିଛି କ'ଣ ওয়ার্ড আমি যে ওয়ার্ড প্রোগ্রামে কাম করছে দ্যাট ইজ 100% ডকুমেন্টারি ওয়ার্ক বট এক্সেল যেটা কাম করছে ইউ শুড নো দিস ইজ 100% অ্যাকাউন্টিং প্রোগ্রাম and as for the accounting funda 0 doesn't have any value after the decimal point you have to set the things all over again how many places you want to go after the decimal point now tell me ଆମର ଦଶମିକ ଆଗରୁ ଯେତିକିଟା ସଂଖ୍ୟା ଆସୁଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ହୋଲ୍ ନମ୍ବର୍ସ ଓକେ ତେଣୁ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ଡୁ ତମର ପ୍ରଥମେ କିଛିଟା ହୋଲ୍ ନମ୍ବର ଆଗ ପୁଟ୍ ଅନ୍ କର so these are some whole number ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି 14.00 74.00 87.00 and finally 965.00 so what I do after writing down the whole numbers select all the data together data କେମିତି ସିଲେକ୍ସନ କରିବ ମଝିରୁ ମାଉସ ଟାଣିଲ this is selection okay select କଲେ ଏଠି ଆମେ କୋଉ ମେନୁ ଅଛି ହୋମ୍ ମେନୁ ଏଠି ଦୁଇଟି ଅପସନ୍ ପାଉଛେ ଗୋଟେ ହେଲା ଇନକ୍ରିଜ ଡେସିମାଲ and the second one is decrease decimal increase decimal upare gote thara click kale see 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 see टिके अगर मोर गोटे 0 रो नथला बर्तन 10 0 आसी गला होल नंबर पर why because what I am defining how many places I want to go after decimal point 10 places to go so 10 0 remains मते सिस्टम को पर्टिकुलरली कमांड दवा पड़िबो दशमी पर मु केते घर जीवी जेते घर जीवी सेतरा 0 रहइबो सिमिलरली जदि 0 को हमर काटिबो एटी कोन आसा डिक्रीज गोटे कटला दुईटा कटला तीनटा गला चारटा गला पांचटा गला छटा गला सातटा गला आठटा गला डन ओके कारण सो छोटे छोटे जिंस इट मे क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू तमे लेखि लेखि चलथिबो डाटा कटि कटि चलथिबो ओके अच्छा ये गोटे प्रॉब्लम हे पारे आकु केमति सॉर्ट आउट करबो सिखिलो अनदर प्रॉब्लम हमर कोन हे पारे हाँ यू कैन डू ऑल्सो दिस वे तुम जो जिनस कहल सब तुम कौच मोर दीटा घर जीवी मु होल नंबर लिखा आगु आग से ऑप्शन टाक एक्टिव कर दी यस दैट कौन ऑल्सो बी डन ताल तुम कौन कर जितेटा घर से भाया लिख सिलेक्ट करदेल ये कौन कल 1 2 दी थर एक्टिव करदेवी बर्तमान तुम लिख गोटे एक्टिव कलापर भी से नेलानी आई थिंक ताकू जदि ए प्रोसेस रे न होची टिके अलगा प्रोसेस ट्राई करिवा देखिया को सिलेक्ट कली एटी जनरल मोड अछि ये जनरल मोड रे असले थे हम नंबर मोड को टेक्स्ट साइंटिफिक मोर नंबर फॉर्मेट्स डेसिमल प्लेस केते अछि 2 ओके 2 प्लेसेस ओके कली है सेठी जदि डायरेक्ट न है तुम ये तरह से सेम जिनस एक्चुअली है सर्टकट थिला जदि सर्टकट न है देख ये घर मुझे लिखी सब 2 घर वाला लिखी 2 प्लेसेस तो आगे जितकीटा घर लिखी से घर को सिलेक्ट करदेल होम रे जनरल मोड अच्छे आगे पलि आस मोर नंबर फॉर्मेट्स भितर ये जीव कौटू को नंबर डेसिमल प्लेस 2 सब तुम कह मोर 3टा शून्य रखी तो चेंज कर 3 घर ओके आपर तुम ये जहाँ भी पूर्ण संख्या लिख सबूर के 3 3टा शून्य आसीज ओके मानुअली करते मूल तुम सेपरेटर
डिस्ट्रीब्यूशन करदेव ओके अच्छा अनदर प्रोब्लेम आम कौन हो पारे आम सपोज कहगला गोटे बड़ संख्या लिख मुझे गोटे बड़ संख्या लिखिली डन देख लिखि सारी मत लिखला बेलू मत कौन प्रोब्लेम मुझे फेस कर बस सरीगला जो मुझे नेक्स्ट घर को जाऊँगी ये कौन देखला 4.324 32 e plus 33 व्हाट इज इट तुम समस्ते तुम डेली डे टू डे लाइफ रे ये टाइप प्रोब्लेम भितर ट्रैप हो स्पेशली when you are using a calculator and doing the same calculation again and again multiple times बार बार प्लस माइनस इंटू कर सारा पर तुम एलसीडी स्क्रीन में कौन आस गोटे बड़ सिग्मा ये भाया साइन आस जाऊनी तुम ना आगू जा पड़छ ना पछु जा पड़छ सो सिग्मा ई दिस स्टैंड्स फॉर इनफिनिटी असंख्य अनकाउंटेबल ये जो ई प्लस 33 देला व्हाट डज इट जस्टिफाई 33 वाचक संख्या आम लिखीचे आर न्यूमेरिकल लेंथ के 33 नंबर बट टेल मी 33 संख्या को कैन यू प्रोनाउंस इट कैन यू एक्सप्रेस इट 100 कि 1000 कि लक्ष कि कोटी आम कहीपर कि वी नो सम वैल्यू हैज कम बट वी कैन नॉट प्रोनाउंस इट बिकॉज दिस इज अनकाउंटेबल मोड से डाटाटा गोटे सर्टन लिमिट पर से असंख्य मोड को कन्वर्सन हो जाए बट खाली कन्वर्सन ठीक अच्छे आम प्रोनाउंसिएशन करें वर्णना करें बट ताकू प्रिंटिंग में तो देखी पार वी मे नॉट प्रोनाउंस इट वी मे नॉट एक्सप्लेन इट बट यू कैन सी इट इन द प्रिंटिंग बोर्ड आम तो प्रिंटिंग में आम केमती देखा वेरी सिंपल ट्रिक जोटे ये टाइप बड़ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन करार अच्छी एंटर की बाम पटे गोटे की अच्छे सिंगल कोट डबल कोट देख पार्छ एंटर की बाम पटे गोटे की अच्छी गोटे सिंगल कोट उद्धत कमा अरे सिंगल कोट डबल कोट ओके मुझे कौन कली सिंगल कोट साइन टे देली जो मोर ये टाइप एक्सप्रेशन दरकार स्टार्ट्स विथ ए सिंगल कोट एंड तुम पृथ्वी जेड बड़ संख्या तुम लिख है आउ डाटा मोर इनफिनिट मोड को गला वन मोर थिंग तुम जो एक्सेल सीट रे काम कर टाइम टू टाइम ये कौन देख गोटे ग्रीन सिंबल आसीगला फॉर योर नॉलेज आमर प्रिंटिंग रे नाली लगार किसी आसबनी बट एक्सेल तुम कम को टाइम टू टाइम कौटी ग्रीन देखो कौटी ब्लू देखो कौटी रेड देखो यहाँ डिजाइन पे नुहे सम स्टेटमेंट इज देयर कौन स्टेटमेंट टिके आगुरी मुझे डायरेक्ट लिखुली मोर एरर देखा माने कौन डाटा मोर इनफिनिट मोड को पड़ूला बर्तमान मुझे सिंगल कोड देके लेखा आरंभ कली मोर एररटा पड़ेगा माय एरर गन सो कहीं एरर गला ये ग्रीन ऊपर क्लिक कले ये येलो बॉक्स आसला ये पुणी क्लिक कर बिकॉज ऊपर ये आंसर बाहर नंबर स्टोर्ड आज टेक्स्ट इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर आमे संख्या को संख्या करे देखुचे प्रिंटिंग संख्या संख्या रे ही आसीबो बट कंप्यूटर को कौन बुझेले ऑल आर टेक्स्ट ऑल आर नॉट नंबर सो अकाउंटिंग रूल डेविएशन हेलानी एरर आसला कारण अकाउंटिंग नियम अनुसार होल नंबर पर तुम डिफाइन करूना जीरो रहे नहीं अकाउंटिंग रूल अनुसार 5-10टा स्टेप गला संख्याटा मोर ऑटोमेटिकली इनफिनिट मोड को कन्वर्ट हो जाए बट ये दुईटा भितर कॉमन फैक्टर रहा कौन ऑल आर एप्लिकेबल ऑलवेज ओवर द नंबर ओनली इट विल नेवर अप्लाई ओवर द टेक्स्ट अक्षर ऊपर फॉर्मूला अकाउंटिंग नियम लागू हुए नहीं तेणु मु संख्या को संख्या कर देखुची प्रिंटिंग रे जहाँ देखुची से ही आसो बट कंप्यूटर को कौन बुझेली these are text because number stored as text in the memory of the computer okay ये बड़े एरर टाको काटिबो डन अनदर एरर हमर कोन आसी पारे एठी मोर आउट एक्सप्रेशन लिखि से +3 आर्ट्स लेखिला को किछि फरक आसिला तो लेखा सरी गला अब नेक्स्ट घर को हम जाउचे एठी मेसेज कोन दला देयर इज ए प्रॉब्लम विथ दिस फार्मूला व्हाट फार्मूला आर यू राइटिंग डाउन इन फार्मूला हियर टेल मी तुम ये किसी फर्मूला काम कर कि बट ये फर्मूला कहीं देला बिकज आमर फर्मूला आम अंक कौन कसे मेसीन कौन कैलकुलेटर ओके कैलकुलेटर प्लस माइनस इंटू डिविजन देखिए आउटपुट बाहर करछे बट टेल मी द प्रोसेस कौन प्रोसेस 1 1 युक्त 1 बाहर कर को प्रोसेस लिख 1 + 1 देन इक्वल टू बट इन कंप्यूटर तुम जो किसी फर्मूला काम करने जाओ योर फर्मूला और फंक्शन ऑलवेज बिगिन्स विथ इक्वल टू साइन जदिव ये मु आडिशन करने चाहूनी जेहेतु प्लस साइन टा दे देछि कंप्यूटर कौन बुझला शायद मते आड ऑन करने एंड आई फॉरगेट टू पुट द इक्वल टू साइन
कारण कंप्यूटर फॉर्मेट कौन आग दब इक्वाल टू तापर 1 जुक्त 1 रिजल्ट पाइबो केमती एंटर की मु प्लस साइन देली मोर टेक्निकालिटी एडिशन करिवार नाही बट जेहेतु मु प्लस रु एक्सप्रेशन लिखा आरंभ कली कंप्यूटर को लॉजिक कौन मिलला शायद मोर एडिशन करिवार थिला बाय मिस्टेक मु इक्वल टू छाड़ी देछे सिंबल देछे नंबर लिखिछे टेक्स्ट लिखिछे सो इट इज कॉम्प्लेक्स सिस्टम को प्रॉपर कमांड मिलुनी एक्चुअली व्हाट यू वांट टू डू तमे कोन करे तमे चाहछो बराबर सो आकु केमती हमर काटिबा सेम प्रोसेस टिके आगु ऑलरेडी मु डिस्कस कर सारी सिंगल कोट एंड दिस इज +3 साइज एंड माय एरर को ओके सो आमे प्लस को प्लस आकार प्रिंटिंग रे देखिबा नंबर को नंबर आकार रे देखिबा अक्षर को अक्षर आकार देखिबा बट कंप्यूटर को बुझिबा सबुडी कहला टेक्स्ट सो अकाउंटिंग रूल डेविएशन हेलानी एरर आसिला बुझ पल्लो कोन मिथुन बुझ पल्लो नि माने बुझिना बुझिना कोडी बुझिना को सुन देखो तुम तो मु एक्सेल फॉर्मूला पार्ट पे आरंभ करनी खाली गोटे छोटे जिनस कहि दउची तुम 5 गुणन 10 तुम कैलकुलेटर दिया गला केमती करियो मते को तुम कैलकुलेटर दिया गला कुआ गला 5 गुणन 10 रो फलाफल बाहर करो टेल मी द प्रोसेस तुम कोटा आगो टिपिबो द्वितीय कोटा करिवो तृतीय कोटा करिवो 5 * 5 इक्वल टू दैट हमर एक्सेल टा कोन अकाउंटिंग प्रोग्राम एक्सेल लॉजिक होची कोन आमे जो घरे फलाफल रखिबा सेठी आगो दबा इक्वल टू साइन कारण इन एक्सेल पर्टिकुलरली इन कंप्यूटर तो मन पका तो मैंने जो वर्ड पढ़ी टेबुल जो फॉर्मूला देखते आग आसला इक्वल टू ना मन पड़ा तो सेम फंडा से फॉर्मूला ऊपर क्लिक कले इक्वल टू 100 आसला तापर सम के एवरेज काउंट मैक्सिमम बाहर करतले एठी एक्सेल में डायरेक्ट फॉर्मूला तैयारी करछे सो एक्सेल लॉजिक होची कोन इन एक्सेल योर फंक्शन ऑलवेज बिगिंस विथ इक्वल टू साइन मु एठी जिंस कोन कर देली एठी गोटे एक्सप्रेशन लिखिली +2 आर्ट्स कंप्यूटर कौन बुझला मोर बोधा एडिशन करिवार थिला कंप्यूटर गोटे कमांड मिलला मोर बोधा एडिशन करिवार थिला बाय मिस्टेक मु इक्वल टू दबा भूली जाइछि कारण एटा पूरा कंप्यूटर एटा कैलकुलेटर नुहे जे लास्ट को दबा इक्वल टू कंप्यूटर आग दबा इक्वल टू जो घरे फलाफल बाहर करिवो सेति से एरर देखैला प्लस साइन देइछे ऑपरेटिव सिंबल नंबर देइछे टेक्स्ट भी लिखिछे सो सिस्टम को प्रॉपर्ली कमांड मिलुनी टेक्निकली व्हाट यू वांट टू डू आमे कौन करवा सब एरर को काटिबा सब एरर को काटिबा केमती स्टार्ट्स विथ ए सिंगल कोड देन राइट डाउन +2 आर्ट्स ताले एटी कोन हला मोर +2 आर्ट्स अक्षर संख्या सिंबल व्हाट एवर डिस्प्लेड कंप्यूटर बेसिक नियम कौन कहजे व्हाट एवर डिस्प्लेड दैट इज प्रिंटेबल से रामदाम साम हरिगोपाल किए था दैट डजंट मैटर मोर स्क्रीन ने डिस्प्ले आसला माने प्रिंटिंग बाहर बस माय पर्पस गेट फुलफिल्ड मोर कार्य साधन हो गला अकाउंटिंग नियम रो डेविएशन हेलानी एरर आसला क्लियर ओके ये सब छोटे छोटे इश्यू तुमको नॉर्मली बहुत हैरान करे तेना आकु टिके बी केयरफुल देखि तुमको काम करे पड़िबो ओके हमरो जेति पर्यंत हम डिस्कशन करनी आ जदि कार किछि कंफ्यूजन अछि कि डाउट्स अछि टेल मी कारण वी आर गोइंग टू द एंड ऑफ द लेसन टुडे एटा तमरो एक्सेल लो फर्स्ट पार्ट आज सरला आमे नेक्स्ट क्लास एटू जोटू छाड़ी छे पुनी कंटिन्यू करबा कारण एक्चुअली हमर को चैप्टर आज हम स्टार्ट करतले पेज सेटअप तनु पेज सेटअप करबा आगुरु तुमको बेसिक आगो यूटिलिटी जिंसोडा डिस्कशन करूची तापर पेज सेटअप को नेबी ओके तनु चेष्टा करबा एब्सेंट न रहया को रेगुलरली क्लासेस करो कारण एक्सेल तुम जिते प्रैक्टिकल करिवो सेते भलो आउ तुमरो भविष्य में तुम स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइवेट संस्था जोटी चाकरी कर वर्ड आउ एक्सेल तुमको 100% थरो भाव पड़ो नो एक्सक्यूज कंटे बुझ तो सब सीनियर लोक तुम रात बेला आसले भी देखिए बेले बेले सब सीनियर स्टाफ बसवे क्वाइट सीनियर लोक क्लास 1 ऑफिसर बट एक्सेल जानना कंटे बुझ से स्पेसिफिकली आसते खाली एक्सेल शिखा दरकार अच्छी से यू आर लकी तुम मूल बर्तमान शिखी शिखी जाऊँ तुमको फ्यूचर प्रोब्लेम आसो ओके सो आज ये रखा टुमोरो सेम टाइम आमर कंटिन्यू करवा ओके थैंक यू एंड बाय।